Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, some of you have crossed age of 28 and no more eligible for clerical exam. And many of you have asked, sir, what should be our future strategy? Now, for officer level exam, the age is up to 30 years and there are some age relaxation for various categories. So, if your age is now above clerical level eligibility, you can focus on probation officer examination. And this is also seen sometimes the candidate is not able to crack clerical exam but able to crack PO exam. Why? Because in PO the cutoff is all India, whereas in clerical it is state level, and sometime in your particular state cutoffs may be higher than other states, but in PO you get the advantage of all India cutoff. So if your age is over for clerical exam, it is always advisable only focus on probation officer exams and prepare well. How you should prepare well for these examinations? There are two playlists. I am placing both the playlists in the description box. Watch these videos one by one and follow the advice given in that. These are day-wise video. On day 1 you can watch one video and follow that schedule. Another day you can watch the day 2 video and follow the schedule, and you will see lot of improvement in your performance. This is very systematic approach you should adopt. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि सर मेरी एज 28 वर्ष निकल चुकी है और अब मैं क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऑफिसर लेवल एग्ज़ाम अभी आपके लिए बचा है. तो जिन लोगों की भी एज ओवर हो गई है, क्योंकि वैसे तो 28 साल है, कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी है, मगर आपके पास 2 साल और है पीओ के लिए, तो पीओ की तैयारी करनी चाहिए. और ऐसा भी देखने में आया कई लोग क्लरिकल एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते बट पीओ एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि क्लरिकल में स्टेट लेवल कट ऑफ होती है, तो कई स्टेट्स में कट ऑफ आई जाती है. पीओ में ऑल इंडिया कट ऑफ होने की वजह से खासकर आईबीपीएस और एसबीआई में ऑल इंडिया कट ऑफ है, ओनली आरआरबी में स्टेट लेवल है, उसका एडवांटेज आपको मिलता है. तो आपको प्रोबेशन ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करिए. कैसे तैयारी करनी है उसकी 2 प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इन प्लेलिस्ट से एक दिन एक वीडियो देखिए, उसमें बताए रास्ते पे चलिए, दूसरे दिन दूसरी, फिर उसको फॉलो करिए. डे 1 डे 2 इस तरह करके इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं और एक दिन के लिए एक दिन का शेड्यूल है, उसको फॉलो करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.